We thank you all, the honorary dignitaries, for lighting the lamp. Thank you for doing the honors. Thank you so much. यार करिश्मा, गोवा बोलने में जितना कम वक्त लगता है ना, उसकी अचीवमेंट्स बताने में उतना ही ज्यादा वक्त लग जाता है। और इन अचीवमेंट्स की लिस्ट बढ़ाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द आवर नहीं, सुपरमैन ऑफ द सेंचुरी है। वो है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गोवा, जिनके विजन और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स ने गोवा और इफी को सालों साल तरक्की करना सिखाया है। गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। सर, इफ वी कैन हैव यू ऑन द स्टेज। Please come, sir. How are you, sir? Hello, sir. Good evening, friends. For the inaugural ceremony of 54th International Film Festival of India at Goa, along with me, Shri Anurag Singh Thakurji, Union Minister for the Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji, the Minister for the State, Information and Broadcasting, Shri Sripad Naik, Minister for State, Tourism, Ports and Shipping, Madam Dilaila Lobo, Vice Chairman for the ESG, Shri Puneet Kumar Goyal, Chief Secretary Goa, all the ministers, MLA, और खास करके आज के इस माधुरी दीक्षित मैडम, शहीद कपूर, पंकज त्रिपाठी, सनी देवल, all the stars of our film industry, the distinguished guests, esteemed filmmakers, fellow cinephiles, my friends from the electronics and print media, the ladies and gentlemen. It is a moment of a great pleasure to stand before you today as we are set to inaugurate the 54th International Film Festival of India, IFFI Goa. The beautiful seashore, the calm hinterland, and the buzzing event destination named Goa. We welcome you for this annual heart-warming event for this film fraternity. This grand celebration of cinema held in the picturesque state of Goa, the land steeped in the cultural richness and natural beauty, promises to be an unforgettable journey into the mesmerizing the world of films. Being the Chief Minister of Goa, it is my honor to welcome all of you for this week-long event. Dear friends, we all know that cinema is a universal language that transcends the boundaries,
and unite hearts. It has the power to evoke the multitude of emotions, inspire minds, and challenges perspectives. Cinema is a mirror to society, reflecting our dreams, our struggles, and our aspirations. It is a catalyst for change, prompting us to questions, to empathize, to aspire for a better world. IFFI over the years has emerged as become a cinematic excellence, showcasing the finest work of art from around the globe. IFFI is one of the world's 14 biggest and most prestigious international competition feature film festival that is accredited by International Federation of the Film Producer Association, the international body governing the film festival globally. International film festivals such as Cannes, Berlin, and Venice are such other reputed festivals accredited by FIAPF under this category. This year, festival promises to be no different, and with the diverse selection of the films that will take us the journey through the diverse culture, explore universal themes, and celebrates the artistry of the filmmaking. As we embark on the cinematic journey, let us remember that cinema is not merely entertainment, it is an art from that has the power transforming lives. It can ignite our imagination, broaden our horizons, and foster deeper understanding of the world around us. I urge all the cinema enthusiasts and all the stakeholders to immerse yourself in the rich array of the films that IFFI has to offer. The Best Web Series, the award has also been introduced this year. This is aimed at acknowledging, encouraging, and honoring the flourishing content and its creator of OTT platform. In addition to above, I would also like to add that Goa is a proud host of IFFI, and we are committed to providing all the necessary support to make this festival a success. We are also working to make the Goa a hub for the filmmaking, and we believe that IFFI will play a key role in promoting the Goa as a film-friendly destination. The state of Goa has been successfully playing the host to the International Film Festival of India since 2004, a platform that's showcasing India and international films are partitioned from across the globe. In recent years, the Goan film industry itself has grown by leaps and bounds, and it is slowly stepping into the national scene. It is no wonder that the Konkani cinema has carved a place in itself at IFFI. The film festival this year is also be celebrating Goan film under the two distinct sections, either the premier and non-premier section. This year of the 54th edition of the IFFI 2023, the Goan section, we received total 20 entries in both the sections, out of which the 7 films are selected by jury members. I am extremely happy to announce that our Entertainment Society of the Goa has already floated the expression of the interest for setting up of Film City in the state. This is our commitment to all the stakeholders associated with the film industry that we will be complete and procedural related with this work in a fast-tracked and time-bound manner. I'm really happy that, and with the efforts of my government, the Goa is rapidly emerging as the vibrant destination in terms of wedding, MICE, sports event, and convention, etc. Being the permanent venue for IFFI as a feather in the crown of Goa, and we are ensuring that year after year we have improved our capacity and stature as a host. I extend my warmest greeting to all the filmmakers, actors, technicians, and film enthusiasts who have gathered here from across the globe.
Your passion, dedication, and creativity are the lifeblood for cinema. I hope that each frame of cinema on display here transport you to the different world. Let each story touch your soul, and let each cinematic experience leave the indelible marks on your mind. I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude for the Ministry of Information and Broadcasting, the National Film Development Corporation of India, and all the partners who have made this grand celebration of cinema possible. May this year the IFFI be a resounding success, inspiring us, challenging us, and enriching our lives through the transformating power of cinema. I hope that you all have a wonderful time at IFFI and that you take away with you the cherished memory of this festival. मैं फिर एक बार सभी लोगों का गोवा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस आज़ादी के अमृत काल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 का सपना हमें दिखा रहे हैं, मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आगे आने वाले 25 साल के लिए हम निश्चित रूप से विकसित भारत की सोच इसी लेवल पे आगे बढ़ाएंगे। इसी वादे के साथ नेक्स्ट ईयर भी इससे ज़्यादा बड़ा आयोजन हमारी तरफ से रहेगा। म्हज्या समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा नेटान ताळयो वाजोवन हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या फिल्म इंडस्ट्री वाल्यांचे सगळ्यांचे तुमी खूब खूब मना पासून स्वागत करचें। हांव परत एकदा सगळ्यांक येवकार दिता। प्रत्येक इफीक तुमी सगळे जाण व्हडा संख्येत हांगासर जमता। 2004 मनोरमाईन सुरू केल्ल्या ह्या इव्हेंटाक तुमी न चुकता येवपी असे लोक आसात तांचे खरोखरच मनापासून स्वागत करता। आणि परत एकदा भारत सरकारचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे मंत्री बाब अनुराग सिंग ठाकूर हांच्यानी केल्लो सपोर्ट हाज्याच खातीर गोंयाक हे पॉसिबल जाता। त्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। जय भारत, जय गोवा। Sir, we request you to please be on the stage. Thank you, sir, for your inspiring words. We would like you to please stay back in order to felicitate the international jury of a film festival. We would also like you to request our Honorable Union Minister, Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur, Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State, to join Dr. Pramod Sawant on stage. ये साल इफी के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड शैटरिंग बन चुका है क्योंकि हमें मिले हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2926 एंट्रीज, वो भी पूरे 105 देशों से। करिश्मा, ये पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ चुका है। इमेजिन दिस इज द इमेंस पावर ऑफ सिनेमा एंड इफी गोवा। ऑफ कोर्स, एंड अपार विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इस साल इफी की बेस्ट फिल्मों को चूज करके बिना अनाउंस करने की जिम्मेदारी दुनिया भर के फिल्म एक्सपर्ट्स को दी गई है, आर इंटरनेशनल जूरी। तो आइए उनसे मिलते हैं। May I please invite renowned Spanish cinematographer Jose Luis Alkin, जो वर्ल्ड में फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को की लाइटिंग की तरह यूज करने वाले पहले सिनेमाटोग्राफर हैं। A huge round of applause for the genius. French film producer Jérôme Paya, जो वर्ल्ड्स लीडिंग फिल्म फ्रेंच फिल्म प्रोड्यूसर जेरोम पाया, जो वर्ल्ड्स लीडिंग फिल्म मार्केट मार्शेदो फिल्म के डेवलपर है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। Two legends together on the same stage. Moving forward, Australian film producer Helen Laik, ऑस्ट्रेलिया के सबसे रिस्पेक्टेड क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स में से एक, इनकी फिल्म्स
30 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में फीचर की गई हैं। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू हियर हेलन। फ्रेंच फिल्म प्रोड्यूसर कैथरीन डेजर्ट 15 कंट्रीज में 100 से भी ज्यादा फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाली कैथरीन खुद में एक मिसाल है। वेलकम कैथरीन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। I now request the chair of the international competition jury to please come on the stage. Please welcome the prominent international filmmaker and a proud Indian, Padma Shri Shekhar Kapoor. Of course, sir. How are you, sir? Sorry, sir. कैसे How हैं, are you, sir? Good to see you. Very good, thank you, sir. And now it's time for a nice photo op for all the jury members together. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for all the legends together on the stage. Dignitaries, I request all of you to please stay back for the next felicitation. Yeah. सिनेमा की दुनिया में अक्सर हम उनकी बात करते हैं जो या तो कैमरा के सामने है या फिर कैमरा के पीछे रहकर फिल्मों को बना रहे हैं। पर कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो पूरे प्रोडक्शन के पीछे खड़े रहकर कहते हैं तुम करो, मैं इस काम को दुनिया तक पहुंचाऊंगा और सिनेमा के इम्पैक्ट को 10 गुना बढ़ाऊंगा। अब हम ऐसे ही नाम को करेंगे सेलिब्रेट एंड फेलिसिटेट, जिन्होंने पिछले 2 साल से ब्रॉडकास्टिंग पार्टनरशिप करके इफी को टेलीविजन और ओटीटी के जरिए दुनिया के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में पहुंचाया है। The visionary, the mastermind of the broadcast world, please welcome Mr. Kevin Waz, CEO, Broadcast Entertainment Viacom 18. Kevin, sir, you have to stay back for a couple of questions. Please come. What's that? Later? Okay. अब बारी है उस भारतीय को ऑनर करने की जिनके आउटस्टैंडिंग योगदान की वजह से इंडियन सिनेमा नई बुलंदियों पर पहुंच पाया है। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है बल्कि एक एग्जाम्पल है। भारत की संस्कृति, भारत की पहचान में 4 चांद कैसे लगाते हैं। दिस इज अ स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। सर, प्लीज अनाउंस द स्पेशल अवार्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कि नमस्कार, आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा नया अवार्ड शुरू हो गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड होता था एक पहले, लेकिन हमने कहा कि जिन्होंने दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और जैसे कहा कि 4 दशकों से 4 चांद लगाने वाली जी
Any wild guess? Any wild guess? बिल्कुल ठीक कुछ जगह से आवाज आई, मोहिनी से लेके माधुरी दीक्षित तक। माधुरी जी इज ये पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है और पहला अवार्ड किसी और के नाम पर नहीं, जो सबसे ज्यादा डिजर्व करती हैं कोई और नहीं, माधुरी दीक्षित जी आप सबके सामने हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माधुरी दीक्षित। The maverick, the mesmerizing Padma Shri Madhuri Dixit. ये एक नाम नहीं है, इंडियन सिनेमा का दिल है। 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली एक छोटी सी लड़की ने सबका दिल जीता था और सबका दिल बन गई हैं आज। माधुरी जी, वैसे तो ये सम्मान आपको भारतीय सिनेमा में आपके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, पर मैं कह सकती हूँ कि असल में आपके आने से ये सम्मान इस मंच को मिला है। You're truly an era defining star. Absolutely. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for the one and only माधुरी जी, and thank you so much for entertaining us. Wow, what a moment, Apar. कमाल है. It feels beautiful to be a part of this moment, standing on the stage. Congratulations, Madhuri ma'am. Thank you so much, and thank you so much, Shri Anurag Thakur ji. Thank you so much, Dr. Pramod Sawant ji, and Shri L. Murugan ji, for doing the honors. We request you to stay back, please. Hi, Madhuri ma'am. How are you? ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे हम आपको। How are you? Very good, ma'am. How are you? एकदम ठीक। गोवा वाले आपसे इतना प्यार करते हैं तो हम तो बात करेंगे। क्यों गोवा वालों, आप मानते हो कि नहीं? ये हुई ना बात। उन्होंने पहले ही गेस कर लिया था। अच्छा। लेफ्ट साइड से ज्यादा आवाज आई थी, माधुरी माधुरी। मतलब लेफ्ट साइड में मेरे ज्यादा फैन हैं। राइट वाले क्या कर रहे हो? मैं पता लगा लेता हूँ, मैं पता लगा लेता हूँ। राइट वाले ज्यादा फैन है माधुरी जी के कि लेफ्ट वाले? तो यार लोग कहते हैं फिल्मी सितारे, है ना, फिल्मी सितारे, पर मेरे लिए मतलब सितारा नहीं, पूरा पूरा आसमान, खूबसूरती का जहान एक साथ मंच पे आ गया है। करिश्मा, क्या कहोगी मैम को? माधुरी जी, पहले तो मेरी कानों की रिक्वेस्ट है कि आपका जो वो आइकॉनिक डायलॉग है, I mean, हम सबने सुना है, पर अब लाइव मैं भी सुनना चाहती हूँ और गोवा वाले भी सुनना चाहते हैं। Guys, are you ready? इतने छोटे शब्द को आप डायलॉग कह रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं कर देती हूँ। पूरा गोवा एक साथ करेगा, पूरा गोवा एक साथ करेगा। तो मेरी बात बताएं। नहीं, लेकिन उहू उहू के बाद तो आना चाहिए ना। Absolutely, Madhuri ma'am, it's beautiful. क्या आपको पता था जब आप शूट कर रहे थे कि this will become, you know, an emotion? Well, इतना पता नहीं था, लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो इमोशन के साथ ही किया था। So hopefully we were thinking कि ऑडियंस को भी ये पसंद आए, and it did become an emotion, and I'm so happy to be here today. First of all, आप सभी को मेरा नमस्कार। सब मंत्री महोदय जो ऑडियंस में हैं, मेरे फिल्म के सब को कलाकार, यहाँ गोवा की पूरी जनता, कसा Thank you very much for this beautiful award, for honoring me. Nearly 38 years in the industry. Wow. And I've got to work with such wonderful directors and wonderful films, with lovely co-actors, जैसे family जैसे बन जाती थी हमेशा shooting के दौरान. And I'm very, very fortunate that I got the right opportunities at the right time. And thank you to all my fans for making this happen. So thank you very much for all the love. तो मैम यहाँ खड़े खड़े जो इतनी बातें हम कर रहे हैं, इसी बहाने इफी में एक ये खड़े खड़े जो 4 बातें, उसमें हमारा चैट शेष हो गया था इफी बात पे। तो एक दो सवाल है, करिश्मा, if you can start with the first question. मेरा क्वेश्चन ओके है। हाँ, आप पहली बार इफी में आ चुकी है, तो इस साथ के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? How was the experience? Well, IFFI
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ना कि सिर्फ इंडियन फिल्म्स, जो पैन इंडियन फिल्म्स हैं, हर लैंग्वेज की जो इंडिया में बनती है वो, जो इंटरनेशनल फिल्म्स बनती है वो भी यहाँ आती हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ क्रिएट होता है ऑफ क्रिएटिविटी। एंड आई थिंक थैंक्स टू IFFI कि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है और आज मुझे यहाँ अवार्ड भी दिया है। IFFI एक इमोशन है। अब क्या बात, लोग गोवा सिर्फ छुट्टियां मनाने आते थे, अब लोग गोवा IFFI देखने भी आते हैं। वाह, क्या बात है। और मैं चाहूंगी कि IFFI की जुबली बनाए। थैंक यू सो मच मैम, सो स्वीट ऑफ यू। ओके माधुरी मैम, आपका एक फेमस गाना है पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, बस वो ही गाने से मुझे एक आइडिया मिला है फॉर अ गेम। ओके, तो गेम का नाम है पहला छैला एंड बेस्ट, यानी कि सिनेमा से जुड़े आपके फर्स्ट, बेस्ट एंड लास्ट की बातें। आर यू रेडी माधुरी मैम? ओके, आई एम रेडी। ओके, योर फर्स्ट टाइम यू फेस द स्क्रीन? First time I faced the screen was for a movie. It was अबोध, मेरी पहली फिल्म जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन में की थी। तो तभी मुझे मेकअप वगैरह लगा के छोड़ दिया कि आप डांस करती हैं ना? मैंने बोला हाँ। बोले ये गाने पे आपको डांस करना है, और मैं गाना बजाया और मुझे डांस करना पड़ा। सो दैट इज़ माई फर्स्ट मेमोरी, माई फर्स्ट ऑडिशन। ओके, सबसे बेस्ट थिंग यू लाइक ऑन अ फिल्म सेट? फिल्म सेट पे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है फिल्म सेट पे जाना? यू नो, फिल्म सेट पे जैसे एक फैमिली बन जाती है। वी ऑल इंटरेक्ट विद ईच अदर, शॉर्ट्स के बीच में भी वी आर टॉकिंग, एंड इट्स अ फैमिली अवे फ्रॉम योर ओन फैमिली। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंस इन फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, और आपका प्लेलिस्ट में जो लास्ट सॉन्ग है वो कौन सा है? आपका प्लेलिस्ट में सबको जानना है। well, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो गाना 3 दिन से मेरे दिमाग में बज रहा है, घूम रहा है, कौन सा है? वही है जिसका परफॉर्मेंस आज मैं करने वाली हूँ। So the song I'm going to perform on is the last one on my list, and I've been listening to it endlessly and irritating my husband also. Hello sir, how are you? Good to have you here. Hello sir. Good to have you. But thank you so much Madhuri ma'am. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for Madhuri Dixit, ladies and gentlemen. Thank you very much. We're gonna see you very Congratulations one more soon. time. Thank you, Karishma, and nice seeing Thank you ma'am. again. Thank you so much. Thank Thank you. you, Please ma'am. come. लाइए मैम, should I hold this for you? लाइए please. Yeah, दोनों. Thank you ma'am. आइए अपार। चलिए, let's go Karishma. Ladies and gentlemen, now it's time to introduce the Indian Panorama jury for the year. The aim of the Indian Panorama is to select feature and non-feature films of cinematic, thematic and aesthetic excellence. From hundreds of entries this year, 25 feature films and 20 non-feature films were chosen by the jury of notable film personalities from across India. The feature film jury is chaired by the famous filmmaker, director, actor and producer T.S. Nagabharana, along with 12 distinguished film personalities. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। Now let us introduce the non-feature film jury for this year. The non-feature film jury is headed by the noted documentary film director Arvind Sinha, along with 6 distinguished film personalities. A huge round of applause for the non-feature film jury for Indian Panorama. अपार, OTT एक ऐसा शब्द है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका और तूफान दोनों मचा रहा है। जैसे कि तुम OTT के बिगेस्ट स्टार, जुबली स्टार। मैं सिर्फ स्कूप ऑफ हैप्पीनेस लेकर आया हूँ, सिर्फ स्कूप ऑफ एंटरटेनमेंट लेकर आया हूँ। यार कमाल कर रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी स्कूप के साथ अवार्ड जीती हो। मैं यही बोलने वाले थे ना तुम। एब्सोल्युटली। और इसी साल IFFI भी बहुत OTT प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स और कंटेंट को एनकरेज करने के लिए OTT अवार्ड्स रख रहा है। This year there will be Best Web Series OTT Award, जो उस सीरीज के डायरेक्टर, क्रिएटर और प्रोड्यूसर को दिया जाएगा। विनर को एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के साथ सम्मानित किया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो हंसल मेहता लेकर जा रहे हैं? विक्रम सर भी लेकर जा सकते हैं। ओके, इस कंपटीशन में 15 OTT प्लेटफॉर्म से 32 वेब सीरीज ने पार्ट लिया है। विनर चूज करेगी हमारी OTT ज्यूरी। इस ज्यूरी के चेयरपर्सन हैं इंडिया रिनाउंड फिल्म मेकर, द किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, श्री राजकुमार हिरानी जी।
सर और उनकी जूरी ने सभी एंट्रीज को परख कर 4 वेब सीरीज को नॉमिनेट किया है. सो लेट्स टेक अ लुक एट द नॉमिनेशंस. Congratulations to all the nominees. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for पंचायत Season 2, Director Deepak Kumar Mishra. Rocket Boy Season 1, Creator Nikhil Advani, Director Abhay Pannu. निर्मल पाठक की घर वापसी, Director Rahul Pandey. Human, Creator and Director Vipul Amritlal Shah. All the best to the nominees. May the best win. Absolutely. So guys, the 75 creative minds of tomorrow is the brainchild of Union Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur, to identify, nurture and showcase the young cinematic talents from across India. The 75 participants were chosen from a pool of over 600 applicants by the grand jury. And then the great grand jury will be dividing these 75 creative minds into 5 specific groups who will be creating 5 films. Absolutely. The winners of this competition, the best film in the category, will be evaluated by Shujit Sarkar, Carter Pusher and Dennis Rue. We wish all these 75 creative minds of the tomorrow all the very best. Ladies and gentlemen, please give it up for our esteemed grand and great grand jury. इस साल IFFI Restored Classics कैटेगरी में Restored Classics कैटेगरी में 3 इंटरनेशनल और 7 इंडियन फिल्म्स को शोकेस कर रहा है. सभी 7 इंडियन फिल्म्स को NFDC नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने रिस्टोर किया है अंडर द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, a project funded by Ministry of Information and Broadcasting. इन फिल्मों को फ्रेम बाय फ्रेम डिजिटली रिस्टोर करते वक्त ये ध्यान रखा गया है कि फिल्में वैसी ही दिखें एग्जैक्टली जैसे ओरिजिनल टाइम ऑफ रिलीज पर दिखती थी. मैं आपको बता दूं कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा ओरिएंटेड मिशन है, जहां आने वाले सालों में हजारों यस्टरयर्स की फीचर्स फिल्म्स, शॉर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज को रिस्टोर किया जाएगा. बिल्कुल सही कहा करिश्मा तुमने. तो आइए एक नजर डालते हैं इन हजारों आर्टिस्ट के उस मेहनत एफर्ट पर जो उन्होंने इन फिल्मों को रिस्टोर करने के वक्त डाला है. The National Film Heritage Mission has embarked on a journey to restore iconic Indian classics. Much like the making of a film involves a dedicated group of people, the task of preserving films is a commitment to safeguarding the original artwork. The fragile nature of celluloid demands careful preservation and maintenance. Frames are carefully repaired by hand before being digitized in high-quality resolution. The digitization of a film, when you do it at high resolutions, it is like using a microscope. And all the defects which have kind of happened because of the passage of time, those are going to get magnified. And the obvious thing there is the restoration aspect. Films available in public domain often do not uphold archival ethics and do not present them in correct aspect ratio and resolution. Opportunity to cherish our historical and cultural legacy. आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए.
आपको हमारी कसम लौट आई। आपको हमारी कसम लौट आए। तभी लौट आए हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑल द आर्टिस्ट ऑफ नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। ये हमारी फिल्मों की विरासत एक बार फिर से हमें सौंप रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ अ काइंड। इट डिजर्व्स अ ह्यूज अपलॉज। एक बार जोरदार तालियां 1950s के पूरे सिनेमा को जीने के बाद इन जुबली। आई रियली नो कि व्हाट ऑल इट टेक्स। इट्स ब्यूटीफुल टू सी दिस ऑन द स्क्रीन। एंड मूविंग फॉरवर्ड, Now is the moment जब हम इंडिया के one of the most dynamic union ministers को सुनने वाले हैं। So may I now request the visionary, the hard-working and the ever calm and composed Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur, to please say a few words. Yes, am I? Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, Honorable Minister of State for Information Broadcasting, Dr. L. Muruganji, Honorable Minister of State for and our very senior colleague, Shri Shripad Nayak ji, Speaker Goa Assembly, Deputy Chairman our ESC and other ministers of the Goa government, jury members, officials from the Government of India and the Government of Goa, distinguished members of the international jury, and various other jury members, delegates, veterans of the film industry, my dear friends from the media, ladies and gentlemen, namaskar, a very good evening to all of you. It's my privilege and honor to officially welcome you all to the 54th International Film Festival of India in Goa. In 1902, long before the space organizations were even conceived or conceptualized, a remarkable French film named A Trip to the Moon, inspired by various sources, boldly suggested the idea of space travel and sparked the possibility of travel to moon. And today, we see it happening. India, who has done it so beautifully, the only country in the world with the successful Chandrayaan mission. So it shows that the idea could be conceptualized during the movie, but over a period of time, even the government started thinking towards that side. Imagine a visionary work of art from over a century ago spread the seeds of scientific possibility and progress in people's mind. Isn't it fascinating how these ideas shape our world? Isn't that incredible, the power of cinema? I strongly believe that throughout its history, cinema has captured and chiseled ideas, imaginations, and innovation such that it forms the driving force for peace, progress, and prosperity in a world which is increasingly distressed with division. Our movies are more than just entertainment. They are a significant part of how we live. They affect everything from how we dress. You can look at yourself. For this function, how you are dressed, you look at your iconic actors on the screen and you dress yourself. And who hasn't tried the classic Chulbul Pandey sunglasses? Karan Johar ne to try nahi kiye honge. And how to name our loved ones. बहुत सारे नाम ऐसे हैं, चाहे राज हो या किरण हो, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं. The cultural impact of Indian cinema on the lives of not just Indians, but also most South Asians and beyond is enormous. Through the recently concluded G20 presidency,
The world witnessed India's multifaceted and multi-layered development model based on development, diversity, and democracy. With 1 lakh delegates from more than 125 countries, attending over 200 meetings across India and 60 cities, India's presidency evolved into a people's movement, or as Honorable Prime Minister said, Jan Andolan. ये जन भागीदारी से जन आंदोलन था. Akin to India's approach during the G20 presidency, the main concept and theme of the 54th International Film Festival of India is rooted in the idea of Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, and one future. The 54th IFFI is all said to be melting pot of myriad voices, vibrant culture, diversities, sheer cinematic excellence. From about 3,000 film submissions, and if I have to be precise, 2,926 in the international section, a whopping 198 films from 78 countries will be screened this year at the 54th IFFI. अगर मैं पिछले साल से तुलना करूं तो इस बार लगभग 3 गुना ज़्यादा फिल्में हमारे इंटरनेशनल सेक्शन में आई है. ये अपने आप में IFFI की सफलता को दर्शाता है. And the 54th IFFI will showcase 13 worldwide premieres, 18 international premieres, 62 Asia premieres, and 89 India premieres. 25 feature films as well as 20 non-feature films will be showcased in the Indian Panorama section, form a broader spectrum of entries. For the next 8 days, Goa will be colored in the grandeur of 54th IFFI, a creativity, cinematic brilliance, and sheer entertainment that epitomizes India's growing position as the world's 5th largest market in the media and entertainment space. Yes, I have rightly mentioned it. India, on one hand, has become the 5th largest economy of the world. On the other hand, all because of your efforts, India is the 5th largest in the world media and entertainment industry. And in the coming years, in next 5 years, India is going to be the 3rd largest economy of the world. At the same time, we will also become the 3rd largest market in the media and entertainment space. As in the film Anand aptly said, Zindagi lambi nahi, badi honi chahiye babu moshai. And IFFI is here to ensure that your cinematic experience is nothing short of grand. Similar to the last year, where we initiated many firsts, we continue that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, and from here on, IFFI will bestow an award titled Best Web Series OTT Award, which will acknowledge and honor the transformative role of the original content creators in India, celebrating their contribution to the employment and innovation. ये इसलिए भी कर रहे हैं कि जब कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, तब OTT प्लेटफॉर्म पर इन सब ने आपका मनोरंजन भी किया और आज लगभग 28% की दर से हमारा OTT सेक्टर बढ़ रहा है. तो इसीलिए हमने तय किया है कि OTT में बेस्ट वेब सीरीज और वो भारतीय कंटेंट जो बना होगा उसको अवार्ड देने की शुरुआत करने जा रहे हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम IFFI has augmented the scope of Film Bazaar by introducing a well-curated VFX and tech pavilion to showcase the latest innovation from the cinema world, a documentary section to its co-production market to support non-fiction storytelling. This year, for the first time, we also present Cinemela, an extravagant celebration of our rich diversity and culture with the showcase of regional films, food, music, culture, and many more. Next up, we are introducing a restored, as you have seen the video here, of the restored classic section feature films. We're going to show you about 7 world premieres of the
meticulously restored masterpieces of the NFDC and NFAI under the National Film Heritage Mission. वैसे इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं है, इस मिशन के अंतर्गत 5000 पुरानी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज को रिस्टोर करने का, डिजिटाइज करने का दुनिया भर में अगर किसी एक देश ने बीड़ा उठाया है तो उसका नाम भारत है। और मैं देख रहा था बाकी किसी एक्ट पे ताली बजी हो ना बजी हो, जब आपने वहीदा रहमान जी को देखा हो या हकीकत का गाना देखा हो, या फिर अभी तो राजा हरीशचंद्र ने दिखाई आपको, नहीं तो शायद आप खड़े होकर ताली बजाते, लेकिन आज की पीढ़ी को वो हम परोसने वाले हैं जो उस समय में नींव रखी गई थी, और उसी कारण से आज भारत का सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री बनी। एंड आई एम प्राउड टू से हियर दैट दिस ईयर 54th IFFI feature films for the 40 remarkable women filmmakers. There are 40 remarkable filmmakers, and I said women filmmakers. Let me again say that. मैं ठीक कह रहा हूं सर कि नहीं? और ये 40 कौन है? आपके बीच में बैठी हुई हैं। Their talent, their creativity, their unique perspectives promise to make the melange of ideas a celebration of diverse voices and narratives. And moving on to something that is very close to my heart, which I started about a couple of years back. Where are the 75 creative minds sitting? 5-10 तो दिख गए, 75 दिख नहीं रहे हैं। 75. We started about 2 years back. This is the third batch, and we got more than 600 applications this year, and they are selected from every nook and corner of the country. As Prime Minister Modi's vision to provide the youth the platform to showcase their talent, and this year from among 600 such applications, 75 young filmmakers have been handpicked from 19 states, including from the remote areas like Bishnupur, Jagat Singhpur and Sardarpur. ऐसी नाम जो आपने शायद कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन इन 75 लोगों के नाम आप आने वाले वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े चमकते हुए नामों में सुनोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। And we are thrilled to announce for the first time ever a recruitment drive for these creative minds this year, opening up the doors to limitless opportunities for bringing limitless opportunities to their blossoming talents and career trajectories. The Honorable Prime Minister time and again emphasized on building an accessible India with Sabka Saath, Sabka Vikas. Today, we aspire to add another dimension to this vision, Sabka Manoranjan, that is entertainment for all. Inclusivity remains a guiding principle for the 54th IFFI, as well as all venues for this year's festival will be equipped with facilities catering to the specially abled, जिनको कभी disabled कहा जाता था, हमारी सरकार specially abled भी कहती है, विकलांग नहीं दिव्यांग कहती है, और उनके लिए सुविधाएं भी देती है। ना केवल सारी जगहों पर सिनेमा थिएटर्स में जाने की सुविधा होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब के लिए विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हम ऑडियो डिस्क्रिप्शंस और साइन लैंग्वेज का प्रावधान भी करने जा रहे हैं। ये पहली बार होने जा रहा है, ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। It gives me immense joy to tell you that the Government of India has taken several measures in the recent past to augment the media and entertainment sector in India. Recently, under the able leadership of Prime Minister Modi, the Cinematograph Act, which was amended, and it stands now as Cinematograph Amendment Bill 2023, received approval from both the Lok Sabha and Rajya Sabha. This legislation not only broadens the legal framework, shifting its focus beyond censorship to encompassing the copyright protection, but also introduces vigorous measures against piracy. अगर कोई अब हमारे फिल्म निर्माता, निर्देशक या हमारे
किसी भी स्टार का, चाहे सनी देओल हो या शाहिद कपूर हो, कोई भी हो, या बड़े हमारे डायरेक्टर्स हो, इनके काम को चुरा कर अगर कोई दिखाएगा तो उसको 3 साल की सज़ा, 3 लाख रुपए से लेके 5% फिल्म बनाने की कॉस्ट तक उनको जुर्माना हो सकता है। ये न्याय दुनिया में बहुत कम देशों में दिलाया गया है, ये भारत सरकार ने मोदी जी के अंतर्गत कर दिया है। Now let me come to what we said last year. Last year in the Cannes Film Festival, we introduced the incentive scheme for the production of foreign films in India, offering a reimbursement of up to 30% of their expenses incurred in India, capped at 2.5 crore rupees. We realized that given India's size and vast potential, there was a need for higher incentive to attract medium and big budget international projects. Today I am pleased to announce an increase in the incentive for foreign film production in India. The maximum incentive will now be up to 40% of the expenditure incurred, with a raised limit of rupees 30 crore rupees, exceeding 3.5 million US dollars. $3.5 million US dollar तक आपको इसमें लाभ मिल सकता है, and you can also get additional 5% bonus for significant Indian content. So we are pushing both, making films in India and also pushing the Indian content. प्रसून जोशी जी भी यहाँ पर बैठे हैं। प्रसून जी, आपके पास फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए तो आती है, लेकिन अब हम यहाँ पे फिल्में भारत में बनाने के लिए भारत को फिल्म कंटेंट हब जो हम दुनिया में बनाना चाहते हैं उस दिशा में कदम उठाया है। So the paradigm shift in incentivizing film production serves as a testament to India's commitment and support for artistic expression and reinforces our position as a preferred destination for cinematic endeavors. Moving on, I would like to take the opportunity to congratulate the winner of the most prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for 2023, Mr. Michael Douglas from the United States, and he will be joining us on 28th, that is the closing ceremony. I won't take more time. I know you are all waiting for the entertainment part. All I want to say is every year we are adding one or the other chapter to the IFFI. Please keep guiding, and I'll make sure that whatever suggestions you send, we'll try and incorporate that. Prime Minister Modi wants India to be a developed nation by 2047, and we also have a vision for IFFI Goa by 2047. I have a vision in mind. I would like to seek your suggestions, what suggestions you can contribute to make IFFI Goa as one of the topmost film festivals in the world by 2047. So I'm sure you will keep coming in large numbers like this and keep motivating our film industry. You are the strength and pillar of the Indian film industry, the audience. If you don't go to the cinema halls, they can't make money and they can't produce more films. Recently, we have seen a couple of good films who have done extremely well, and one of them was Gadar 2. Sunny Deol हमारे बीच में है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। दूसरे शाहरुख खान हैं जिन्होंने जवान से लेके पठान तक ये सारी फिल्में, इससे पिछले साल RRR हो, KGF 2 हो, पुष्पा हो, एक के बाद दूसरी भारतीय फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं कभी इसको टॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड में यहाँ नहीं जाता, मैं इसको कहता हूँ भारतीय सिनेमा। तो आइए आज भारतीय सिनेमा के लिए करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स के लिए, और सबसे बड़ी बात दर्शकों के लिए जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बड़ा किया है, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और मेरे दोस्त और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, आप गोवा में अवसर देते जाइए। नेशनल गेम्स भी करवाया है, IFFI भी करवाया है, और कहोगे तो कुछ और नई चीज़ें भी ले आएंगे। गोवा है ही ऐसा
कि एक बार आओ तो बार बार आने को दिल करता है। सभी गोवा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अनुराग जी। लास्ट टाइम भी आपको सुनकर बहुत मजा आया था और आज भी आपने जो बातें बोली हैं, मेरा भारत महान, बल्कि राइट टाइम टू से हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। सो करिश्मा जी, जिन न्यू इंसेंटिव्स की बात अभी अनुराग जी कर रहे थे अपनी स्पीच में, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल वीडियो है। इफ यू कैन प्ले द एवी नाउ। ऑफ कोर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक अ लुक एट दिस। India, a country of beauty and mysticism, a land of abundant charm, a treasure trove of cultural diversity, and a sea of inspiration for many. This remarkable country, with its splendid heritage, traditions, and sprawling metropolis, offers a feast for the visual senses. India is home to one of the oldest and largest film industries in the world. Each year, thousands of movies produced in India are released worldwide. The stories may be local in nature, but their reach is beyond boundaries. The success of these films internationally is evidence of India's century-old cinematic excellence. India, a talent pool of film professionals, a land of picturesque locations, a culture of warm and welcoming communities, offers to the world an enchanting canvas to create masterpieces of cinema. I think we have a chance to make this kind of a life-changing experience, and I think we need it. Welcome to the best exotic marigold hotel. This is incredible. In India, we have a saying, everything will be all right in the end. So if it is not all right, it is not yet the end. The Indian film industry has exceptional filming talent and resources. With 900 plus animation, visual effects, gaming and comics facilities and approximately 1,80,000 professionals, 10% of the global animators and VFX artists are from India. Over the years, Indian animation and VFX studios have contributed to many internationally acclaimed films, which have been recognized and appreciated on some of the world's biggest stages. 170 plus international projects from 35 countries with a diverse range of production and post-production requirements have taken advantage of India's diverse and varied locations, vast local talent pool, and availability of state-of-the-art equipment and facilities. Great filmmaking starts with great collaborations. India has partnered with several countries to co-produce many films with international partners under the official audio-visual co-production agreements. To further boost international content collaborations, the Government of India has now significantly enhanced the cash incentives offered to foreign production companies for production of films in India and for official co-productions. Feature films, animation shows, web series, reality television shows, and documentaries are eligible for claiming this incentive. Under the scheme for foreign productions, up to 40% of the expenses incurred in India, subject to a cap of 300 million rupees, can be reimbursed to the producers. This is a 12-fold increase from 20 million rupees offered earlier. The reimbursement is also available for projects that undertake only post-production, visual effects, and digital or animation work in India. And the process for claiming such incentives have now been simplified further.
If the project has been granted official co-production status under any of the existing bilateral treaties, 30% of the qualifying expense can be reimbursed, subject to a cap of 300 million rupees. The co-producers can also claim up to 50% of the approved amount as interim reimbursement after the start of the project in India. Top this up with incentives offered by various Indian states, and producers can avail of approximately 4 million USD as incentives. The Film Facilitation Office, FFO, has been set up to provide a single window permission clearance system under the government's Ease of Doing Business initiative, which facilitates creative collaborations on a global scale. India, a country of storytellers, a land rich in filming resources and breathtaking landscapes, an environment that inspires filmmakers to convert their vision into reality. Come, experience this phenomenon. Come to India. Come home to your imagination. International Film Festival of India, the 54th edition, live from Goa. We are covering... So that was the opening ceremony of the India International Film Festival in Goa. It's just begun, and 9 days of the filming extravaganza where the best of Indian film industry there, what they produce will be showcased, along with a lot of top international films that will be screened as well, and a lot of business will be generated. And the entire goal, the thrust here, as you could make out from that AB as well, and from the speech of the minister who was there, Anurag Singh Thakur, India's I&B Minister, Information Broadcasting Minister, that the entire goal is to make India one of the top film destinations. IFFI as a premier film festival of the world, it should be on the map in the film world by 2047. He invited suggestions as well from all those people who were there, and I'm sure you could send them to him as well if you have something really good to convey. So that's it for the moment, but we will keep getting you all the updates from not only IFFI in Goa, but from all the world as well. Keep watching DD India for all the latest. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your fingertips. Hello and welcome to Express News with me, Deepika, your daily half-an-hour window that brings you all the latest news and updates from the country and the world in 30 minutes. Let's begin. India and Australia are holding second India-Australia 2+2 Ministerial Dialogue and the 14th Foreign Ministers Framework Dialogue in New Delhi to further strengthen their comprehensive strategic partnership. Defence Minister Rajnath Singh also held bilateral talks with his Australian counterpart Richard Marles in New Delhi on the sidelines of the meeting. Australia's Deputy Prime Minister and the Defence Minister Richard Marles and Australian Minister for Foreign Affairs Penny Wong laid wreath at the National War Memorial ahead of the 2+2 meeting in India's Delhi this morning. Indian Minister V. Muralidharan is visiting Tanzania and Kenya from the 20th of November till the 23rd of it. A 30-member business delegation from India is accompanying the Minister of State for the visit.
The visit to Tanzania is aimed at strengthening India's strong bilateral relations with these countries. In Kenya, V. Muralidharan will inaugurate an exhibition on the role of the Indian soldiers in East Africa during World War I. As 41 workers are still trapped inside the partially collapsed Silkyara tunnel in Indian northern state of Uttarakhand, the government has laid a new 6-inch pipeline for around 40 meters in order to better deliver food and water to the trapped workers. Indian Prime Minister Narendra Modi is constantly monitoring the evacuation. Prime Minister Modi has assured the availability of necessary rescue equipment by the central government. President of International Tunnelling and Underground Space Association, Professor Arnold Dix, inspected the Silkyara tunnel as the operation to rescue the trapped workers is currently underway. India celebrates 8 years of the Uday